A momentous occasion in the history of our nation, our Independence Day. On this day, 15 August 1947, India broke the shackles of colonial rule and emerged as a free and sovereign nation. This day is not just a commemoration of our liberation from foreign domination, but a tribute to the courage, determination, and sacrifice of countless individuals who fought relentlessly for our freedom. Struggle for independence was long and arduous. For over 200 years, our forefathers endured oppression, exploitation, and injustice. Yet they never lost hope. From the first spark of resistance in 1857, now is the first war of independence. We must remember that independence is not just about freedom from foreign rule, but also about freedom from poverty, illiteracy, and inequality. Our freedom fighters envisioned an India where every citizen enjoys equal opportunity, where justice prevails, and where every individual can live with dignity. In the last 77 years, India has made remarkable progress in various fields, be it science, technology, education, and economy. We have established ourselves as a nation that is strong, self-reliant, and capable. As we look toward the future, it's our responsibility to protect the values that our nation was built upon: democracy, secularism, and inclusivity. We must work together to bridge the gaps of inequality and ensure the fruits of development reach every corner of our country. We must strive to build an India that is not only strong and prosperous, but also compassionate and just, and to the ideal of freedom and justice. Let us work together to make India a nation where every citizen can truly feel proud. Thank you. Thank you. The most beautiful place is home, where we spend all our time. Yeah, India is our love, is our... Now I would like to give a call to Imtiaz sir for speech. उलेमा इकराम शेख साहिब, आदरणीय लेक्चरर्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज हम सभी देश की आजादी की 78वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। 15 अगस्त भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय त्योहार है। इस दिन को हम सभी भारतीय स्वतंत्रता दिवस के नाम से भी इस दिन को जानते हैं। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। इसी दिन हमारा देश सैकड़ों वर्षों की अंग्रेजी पराधीनता गुलामी से स्वतंत्र हुआ था। इस दिन विद्यालयों में देश के प्रति कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ देशवासियों के नाम संदेश तथा देश पर मर मिटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को आज ही के दिन Principal and my teachers and all the school fellows, a very good morning to all of you. Today we gather under the banner of freedom, celebrating the 78 years of independence. This day is not just a date on the calendar, but a reminder of extraordinary courage and sacrifice that you brought to our nation. Our struggle for independence was a testament to the strength of the Indian spirit, a spirit that refused to go down to drain, that stands firm in the face of injustice. There was a collective journey, a movement led by millions for a free India,
where every individual could thrive in peace and dignity. उस स्वतंत्रता को और उसकी रक्षा के लिए हमें हर समय हर कीमत तैयार रहना चाहिए। भारत के तीनों सेनाएं जल, थल, वायु, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स तथा अन्य बलों की परेड का निरीक्षण करते हैं और उन्हें सलामी देते हैं। देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों ने इनकलाब जिंदाबाद वो नारा है जिसने प्रत्येक भारतीय की रग में स्वतंत्रता का एक नया जोश भर दिया था। सत्यमेव जयते के संदेश पर चलकर हम अपने विचारों, कर्मों में सच्चाई तथा न्याय की अनिवार्यता को समझे, साथ ही देश और समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर देश को एक नए शिखर तक ले जाने का दृढ़ संकल्प करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Of sacrifice. Now I would like to call Gulnaz from class 10 for speech. और आप गुड हैंड दोनों हाथ तालियां भी नहीं बजा रहे हो, जरा जोर से ताली। Knowing that we are all the part of the beautiful mosaic that is India. As we celebrate today, let us also commit ourselves to the progress of our nation. Each one of us has a role to play in the development of India, whether it is through education, through social services, or just being a responsible citizen. Every effort counts, and together we can achieve great things. On this Independence Day, let us renew our pledge to uphold the values of freedom, equality, and justice. Let us support in nurturing the academic and personal growth of our students. Your collective effort play a crucial role in shaping the future. The sacrifices of our freedom fighters and to cherish the gift of freedom that they have bestowed upon us. Let us pledge to honor their legacy by working towards a better and brighter future for our country. Each one of you has the potential to make a positive impact on society, and I encourage you to dream big, set goals, and strive for excellence in all that you do. As we go to celebrate the 78th Independence Day of our beloved India, we reflect on the sacrifices, the struggles, and the triumphs that have brought us to this moment. This day is a reminder of the resilience and unity that our nation was built upon. Who dare to dream of an India free from oppression. They envisioned a land where people of all faiths, cultures, and communities could live in harmony with mutual respect and understanding. As we remember our past, let us also look towards the future. Our journey as a nation is far from over. We face new challenges of unity that defines our struggles for independence. In this time, it is crucial to reflect on our commitment to the principles of justice, equality, and freedom for all. Our diversity is our strength, and it is our duty to protect and nurture it. Let us ensure that every citizen, regardless of their background, feels valued and has the opportunity to contribute to the growth of our nation. On this Independence Day, I urge each one of us to take a moment to reflect on what you can do to strengthen the fabric of our society. Let us pledge to work towards a future where every Indian can live with dignity, peace, and prosperity. May Allah guide us, protect us, and bless our nation with continued progress and harmony. Jai Hind, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In conclusion, let us pray for the continued prosperity of our beloved nation, India, that it may remain free from all harms and negativity. With that, I conclude today's program. Thank you and have a wonderful day.
तमाम मुश्किलात को निश्चितना जिस तस्वीर को दिल को आजाद होंगी शकील लिजा यंतंगम वाला तबलीग को तहनीत अर्जबा से मांगो टाइम लेना में इंशाअल्लाह पूरे जो की तमाम आलम हस्ती को दुनिया की गौर सरजमीन की योजना जुल्म और सितम का दरगम से योजना नतंगमा मुसलमान हर गैर मुसलमान उम्मीद की कि आखिर दी दुनिया को दुरुस्तार चीशितिया दुरुस्त शख्सियती लफ्तार दुनिया की का पूरे चलो जुल्म न सितम छीनियो तयून गमा खत्म तजसिन तेसा कुसीन ज़रबना यरीगती आखिरी ज़मान इमाम महदी अज्जल अल्लाहु फरजहु शरीफ कफ़ीन इंशाअल्लाह परचम ला इलाहा इल्लल्लाह पूरे तमाम दुनिया की जगह का जुल्म न सितम न हर किस्म के इंसाफी छीनियो तयून गमा खत्म तसे अपने इलाही हुकूमत की तशकील ताकसिन खुदा यरीकन सालिफ परवरदिगारना किस्सा हर ज़मान अज्जल अल्लाहु फरजहु शरीफ वो जुहूद की नजारती से वजह अल्लाह परवरदिगारना की मौला इमाम ज़मान नजा तमाम अवान व अंसार जुमरा नुकरातों या अल्लाह और यहाँ मतलब की नती